Jai Gurudev. Welcome to everyone. I take great pleasure in inviting Tribhuwan Maharaj ji, the grandson of Pandit Birju Maharaj ji, and a leading icon today in Kathak, a young dancer who has been truly making his mark all over the world. And we're very excited that he is a part of the jury for Jhankriti. And all of you participants are very lucky today. You're getting a chance to listen to him and interact with him. Tribhuwanji, if we could have you join us, please. Namaskar. Namaskar, आपका स्वागत है. Most welcome. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure. So, Tribhuwanji, I request the other participants to stay mute. The main, you come from a Gharanedar tradition that is spanning so many generations, more than 11 generations at the moment. And you all have seen the different phases of how performances have changed. And today, most of the younger children or the younger participants who come into the world of Kathak and have started to perform, they are given very concise slots. And the module of our entire competition is also a 7-minute video that they can present at the maximum. So I request you to share a little bit about what you feel is the way in which one can go about making it concise in the short time, yet showing all the aspects of Kathak that they should, so that especially in a competition, because they need to be judged on all the aspects. So what do you feel is the best way today to be, in order to balance that in a short time, to show these various aspects? And before you come to that, I request you to please share a little bit about first your own experiences, because you worked in so many different mediums. I'm not sure if many of them know, but you are a wonderful composer. You write so many kavits, and along with your father, Pandit Jayakishan Maharaj, you all compose wonderful music for Kathak and do so much. And so your work is so relevant today in the time of even the social media, that you reach out so much and you're balancing these two worlds. So we'd like to listen to you about these two aspects. Thank you so much. So basically, being born into this family, I always felt that it was a very beautiful opportunity for me that God has, just given me into this family. And the best part about being an artist is the way, other than your words, there are so many other ways for an artist to express their inner self. And it's not only just the words ki if I'm happy, I say main khush hu. If I'm sad, I say main dukhi hu. It's not only about that. You can express yourself in so many ways. You can become some other being altogether. When you are on the stage, you can become somebody else, and you can portray their story and become that character. So I really feel lucky to be born into this family and have such great names, such great artists in the family, and such an easy access to look at them, to just be with them, to listen to what they have to say, to observe. Because it's observation is a very important aspect in my journey. In specific, observation has been such an important thing, because all my uncles, my father, my guru, Maharaji, they all have been extensively traveling. They have hardly been at one place for a very long time, and it's very difficult to catch them. It's easier for the people who are doing their workshops, who are learning from them directly. It's easier for them to catch a hold of them than us, the members of his family. So and I can just say that a lot relies upon observation, and observation is a very important trait for an artist. You have to be very, very observant, and you have to learn from everything. I see now Maharaji has observed, I think, every nooks and crannies of nature. He has grabbed anything possible. The sound of a pebble, on the ground, the sound of a pebble in water. Then what does water do when you hit it with a pebble? The ripples it's making, and
sound, nature, and all those things. He has amalgamated the entire thing so beautifully and structured it into Kathak, woven it into Kathak so beautifully that today it's very difficult to separate these two aspects, that nature is different and Kathak is different. Today it's all about, it's one thing, it's one unit entirely. So observation is a very important aspect, to see your elders, to see great gurus. Now these days social media, YouTube and such platforms are such an easy kya keh sakte hain, such an easy way of seeing such artists, even not going to them, just looking at them. You can still in the olden times, you had to go to them, you had to look at them, you had to learn in person. And uh, the stage was the only place where you could see such influencers of art. So now, because of YouTube, Facebook and all those social media platforms, it's much easier to look at them from the comforts of your home. So observation is one very important aspect, and I am a very keen observer on my behalf. So my father used to compose music, and I used to see him from my childhood. He saw his father doing the same, so he observed it and he imbibed it. I'm sure Maharaji never sat down with a harmonium and taught him ki देखो हारमोनियम ऐसे बजाया जाता है, या this is the rag, this is the ragini, आप इस तरीके से काम करिए. I'm sure that did not happen, and that is the same case with me. Never ever did my father sat and just sit with me and show the harmonium. This is the reed, this is the octave, this is how you have to make rag, this is how you understand rag. You can shift from one rag to the other rag by doing this. Nothing. Everything is based on pure observation. So I saw him doing it and I reciprocated, just like a monkey, basically. So I reciprocated what he is doing, and from that I gained my own, you can say, examples and ways of doing it. Now I can't say that I'm doing things 100% like he does, because I have the addition of technology. Now today's technology is something that my father or Maharaji would not have understood that properly. But now I understand what is sound engineering, how do you make certain sounds, and so just finding the perfect sound for the perfect music. That's what I'm saying. So I learned that, I added my own things, and I'm sure that when this PD, because this is a generation, I'm the 9th generation of this gharana, and I'm sure the further more generations that are going to come, they're also going to observe and do it in the same manner. I don't think I'm going to teach them any different. I'm going to let them just flow with whatever the way I have done it, the hard way. I can't say that my way was the easy way. My way was the hard way, because there was no support, and it's like you just there's a turtle, it's on the sand, you let it in the sea, and then it starts to swim automatically. So it's basically like that. You don't teach fishes to swim. You just put them in the water and they swim automatically. So it is something like that. So I really focus on observation, then on the process of getting it into my system, and then making additions to it, just to make it a little more better, a little bit better, or maybe not better, but a little bit my taste, my touch, like that. So the process of making music was always like this. And as far as you can say, the way that I have been hearing music, Maharaji used to make music, my father used to make music, he still makes music, and I'm arranging music for him, and then I'm making my own music now. So I have seen quite a change in the quality, quite a change in the number of instruments used, because at that point of time there was no arrangement, there was no music arrangement. But now music arrangement is a very vital part of making the entire process of music. So this is the musical journey that I have to tell, and observation and imbibing it is the key of it. And as far as dance is concerned, so all the participants will be interested in knowing that for me, dance gained its importance when I was in first year of my college.
that might come as a surprise to a lot of people, but as you know, I was born into this family. I had always seen dance since my childhood, but saying that, okay, I like dance, I want to go into it, I want to make this as my career, and I want to just do this. This is my focus. So that focus was not there my entire childhood, my entire when I was in school. When I was in college first year, at one fine day, I was literally sitting on a bench in my college beneath a tree, and it suddenly struck to me that I don't think I can do anything better. I think this is where my talent lies. So it was just one fine day. My parents always used to be, he has lost a lot of time. How will he recover from this? And a lot of riyaaz has to be done. The practice is the key. Consistency and practice is the key for your dance. So I had nothing of it, absolutely nothing of it. And I used to run when my mother used to call me, chalo class ka time ho raha hai, nacho. I used to run, I used to go out, play with my friends. But I've seen such retaliation from my father as well. My father was very keen in becoming a cricketer, and he was even selected for the Ranji, in fact. So if that was the case, I might have been a cricketer then myself. So Maharaji one day, this is a very good story. Maharaji one day, he was selected for Ranji, so he wanted a new dress. He wanted a new t-shirt, new pants, new pads, new shoes, new bat. He wanted all those new equipments. So he went to Maharaji. He said, he used to call Babu. He used to call my grandfather Babu. So he said, Babu, जरा मेरा क्रिकेट का मैच है, तो मुझे एक टी शर्ट चाहिए, एक जीन्स चाहिए, और पैड्स चाहिए, नए शूज चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए. So Maharaji did not deny. Maharaji didn't say कि नहीं, I will not give it to you. He said, ठीक है, ले लो, पर ये बताओ, ये पैंट शर्ट कब तक चलेगा? बेटा, कभी कुर्ते पजामे की भी बात कर लो. So it was only two words, बेटा कभी कुर्ते पजामे की भी बात कर लो. Only that much he said, and I think that totally transformed my father, transformed his heart. Because he started thinking, why did Maharaj ji, my guru, said this? Ki kurte pajame ki, there was a much deeper meaning to it, very very deep meaning and importance of it. So I'm glad that he understood what Maharaj ji wanted to convey. He was asking him that when will you start becoming an artist? When will you start, kala ki sadhana ko aap kab shuru karenge? So I think that was a wake up call for him, and that sitting on the bench was a wake up call for me. That I totally understood that I think my entire talent and any creativity that I have in here is for dance. So I got it, and I understood that I have lost a lot of time between the years of 2010 and 14. I did rigorous riyaaz. Now riyaaz is a very important topic that I'm telling all of you. My riyaaz used to happen for 8 hours. I riyaaz for about almost about 4 years. I used to do 8 hours of riyaaz divided into 4 hours each. In the morning 4 hours, and in the evening 4 hours. I used to do in the morning I used to do all the foundation stuff, the movements, the hastaks, the chakkars, the tatkar, and all those things, building up my stamina. And in the evening I used to practice things. I used to practice pramelus, parans, I used to practice tukras and all those things. So this came out of the fear that when someone asks me to be on stage, I will not be able to do justice to this name, this gharana, this surname that I have since my childhood. And that really scared me. So I gave it my best, because my father, my guru says that मैं बड़ा जुनूनी हूँ. जुनूनी का मतलब ये होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जुनूनी का मतलब होता है very passionate about certain things. You're not passionate about everything. You're passionate about certain things. So उस पैशन को किस तरीके से आपको सही तरीके से, because सही रियाज, गलत रियाज, and all those things, these matters are there.
तो सही रियाज को किस प्रकार से लिया जाता है, आप कैसे उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके आप अपने शरीर में इस नाच को किस तरीके से बैठाते हैं, दैट प्रोसेस हैज टू बी 100% करेक्ट. इफ दैट इज नॉट राइट, आप 8 घंटा रियाज कर लीजिए, आप 16 घंटा रियाज कर लीजिए, the thing will just not be right into your system. वो उस तरीके से नहीं आएगी. तो सही रियाज करने का तरीका, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना. किसी भी इमारत की अगर जो हमारी फाउंडेशन है, अगर वो वीक है, तो उसके ऊपर आप 100 फ्लोर्स की बनवा लीजिए, 150 फ्लोर की बनवा लीजिए, one day it will just fall down, it will crash because the foundation is not strong. So one has to understand that to make a very strong building, you have to have a very strong foundation. तो सबसे पहले to all those who are अभी who have just started or who are doing it from a few years, उनके लिए मैं बता दूं कि knowing 100 tukras or knowing 100 parans should not be your target. Your target should be how to do your hastak correctly, what is the breathing when I'm doing it, how to do it, because this is just like, it's almost like yoga. You have to do yoga. You are automatically doing yoga when you are dancing. Your breath control is like that. So how to do, what is the work of your lungs, what is the work of your body, how it has to turn, how the shoulders have to be, how the elbows have to be, how the wrist has to be, how the nazar has to be, what you have to think while you're doing macro expressions, micro expressions. There are so many aspects that you have to cover in your foundation to make any dance better, any dance good. तो बात उसकी नहीं होती कि आपको 1500 चीजें नाचनी आती हैं. बात ये होती है कि आप उन 1500 में से कोई एक चीज को भी आप क्या उस प्रकार से लगा पाते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को अपने पैरों से उठा लें, कि वो खड़ी हो जाए, या उनके मन से उनके हाथ में ताली बजाने तक का भी वो ना रहे. क्या वो है आपके अंदर? बिकॉज if it is only for the clapping, it becomes something more of an entertainment, and Kathak is not entertainment. Kathak is definitely entertainment is the last thing. क्योंकि ये नाच सबसे पहले आपके लिए है. आप किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर को सोच के कर रहे हैं, अपने गुरु को सोच के कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को सोच के कर रहे हैं. ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट ऑडियंस को एंटरटेन करना एक कलाकार का काम नहीं है. कलाकार का काम है ऑडियंस को जिस मन से वो अंदर आई थी कुछ और मन में तब्दीली हो जाए, रिफॉर्म हो जाए, और जब वो बाहर निकले तो ऐसा नहीं हो कि बाहर निकल के 2 बार आपके बारे में बात करें और तीसरी बार आपको भूल जाए. महाराज जी को जो एक बार देख लेता था, महाराज जी को जिंदगी भर याद रखता था, जिंदगी भर, चाहे उन्होंने महाराज जी को एक बार देखा हो. I see so many old people coming up to me. हमने महाराज जी को वो 58 में देखा था, 1900 इसमें देखा था, 68 में देखा था, and they still remember how he used to dance. So I'm able to fathom that उन्होंने क्या किया होगा कि वो छाप आज तक लोगों के मन में छपी हुई कि महाराज जी. तो एक कलाकार को should strive to become what महाराज जी had become. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी साधना एंटरटेनमेंट के आधार पर ना हो, आपकी साधना में डिवोशन हो, आपकी साधना में चाहे वो किसी को भी वो हो. कुछ लोग कृष्ण के लिए नाचते हैं, कुछ लोग शिव के लिए नाचते हैं, कुछ लोग सबके लिए अलग अलग है. कुछ लोग अपने गुरु को खुश करने के लिए नाचते हैं. हमें और कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे गुरु हमसे खुश हैं, हम खुश हैं. सबका अलग अलग वो होता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be spiritually connected. Dance, Kathak and spiritualism is very well interwoven. And अगर आपके अंदर वो aspect नहीं है, या वो aspect, वो श्रद्धा, वो भावना आपके अंदर नहीं है, तो आप नाच के नृत्य aspect तक टिक जाओगे. You will be a very good dancer, but you will never be an artist. आप कलाकार नहीं बनोगे, नर्तक या नर्तकी बन जाओ. तो डांस तक जहां तक मेरी जर्नी है, मैंने हमेशा ये देखा है कि जब तक दिशाहीन नाच था तब तक सिर्फ शरीर नाच रहा था. लेकिन जब उसको आध्यात्म से मैंने जोड़ा, डिवोशन से जोड़ा, स्पिरिचुअलिज्म से उसको जोड़ा, तो मुझे
एक ऐसा एवेन्यू नाच का नजर आया, जिसे कहते हैं ना, इट्स लाइक एन ओपनिंग इन योर हेड, एक इंद्री का खुल जाना, जहां पे आपको एक रास्ता ऐसा नजर आने लगता है कि आपको लगता है कि दिस इज व्हाट डांस हैज टू बी, दिस इज हाउ डांस शुड बी, विच मेक्स यू हैप्पी, नॉट द ऑडियंस। क्योंकि आप अगर खुश हैं, आपकी ऑडियंस अपने आप खुश हो जाएगी। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर द ऑडियंस सेपरेटली। So this is something that I wanted to tell you about how I take dance. अब जहां तक बारी आती है, भाई आप लोग को 7 minutes मिले हैं, you have got 7 minutes and you have to show so many aspects. uh, हमारे डांस के दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं एकल नृत्य, सोलो लाइव, एंड एक होता है जिसमें हम कोरियोग्राफी कर लेते हैं या हम रिकॉर्डेड म्यूजिक पे नाचते हैं। तो इन दोनों मोड्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब आज अगर आपको कोई बोले, इफ एनीबडी आस्क्स मी कि इन 7 minutes व्हाट यू कैन डू हैविंग लाइव पीपल, लाइव म्यूजिशियंस विद यू, व्हाट कैन यू डू? सो आई वुड से maybe two things and one tihai, probably 3 things in total in 7 minutes, and that is the actuality of live. When you're having live musicians, आप आवर्तन भी लेते हैं, आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट भी होते हैं। द कनेक्शन विद द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप नाच रहे हैं या आप अपने म्यूजिशियन के लिए नाच रहे हैं। आपको अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से बांध के रखना चाहिए था, एंड महाराज जी वाज लिटरली द मास्टर ऑफ इट, द मास्टर ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस and telling a 5-year-old or a 85-year-old the same thing by saying the same things in the same way, and he used to make a 5-year-old understand a tihai and an 85-year-old the same tihai. So that was his mastery. He had mastered in that section the connect with your audience. अब मैं ऐसे बोलूंगा तो महाराज जी एक एक करके I'll say he has mastered this, he has mastered that, he had basically mastered everything. So जहां तक इसकी जो हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग की बात है, 7 मिनट के आइटम जब मैं कहता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिकॉर्डेड कॉम्पोजिशन। इन अ 7 minute recorded composition you can dance 20 things, but when it comes to live you can dance only 3 things. There is a huge difference between live and recorded. So when you have to do live, I prefer doing everything live. I prefer having musicians by my side, because कथक एक एकल नृत्य है। कथक इज मेंट टू बी डन सोलो। ओके, कथक जो है हमारा नृत्य है, उसकी जो उत्पत्ति भी हुई थी, उत्पत्ति कभी भी इस तरीके से नहीं हुई थी कि वो ग्रुप में नाचा गया। ग्रुप में बहुत बाद में नाचा गया। इट इज क्लोजर टू अस, मतलब दिस पीरियड इन विच वी आर, rather than the period when it started. It is closer to us, much closer to us. मुगल एरा के समझिए, मुगल काल के टाइम पर ये ग्रुप कॉम्पोजिशन हल्की फुल्की मतलब शुरू हुई थी कि 2 लोग नाच लें या 3 लोग नाच लें एक साथ, उसको एक तरीके से उस तरीके से हो। तो उसके पहले इट वाज ऑल एकल। एंड कथक का जो गठन है, जो एसेंस है, वो एसेंस आज भी एकल नृत्य की ही है, एकल प्रस्तुति, सोलो presentation. Okay, so when you're doing a solo presentation, आप ऑडियंस से भी इंटरैक्ट करते हैं, आप अपने म्यूजिशियन से भी इंटरैक्ट करते हैं, और एक इत्मीनान होता है। देयर इज अ सेरेनिटी ऑफ ऑफ हाउ यू आर डूइंग थिंग्स। एंड उस काल में, उस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए दैट व्हेन आई एम ऑन स्टेज, जब मैं एक स्टेज पर हूं, तो मुझे किस तरीके से अपने ऑडियंस को बांधना है, और किस तरीके से आई हैव टू just grasp everything, my stage, my lights, my costume, how I have to design everything, how my chronology is. अब एक पारंपरिक कथक सोलो आप नाचेंगे तो आप विलंबित नाचेंगे, उपज नाचेंगे, थाट, आमद, परन आमद नाचते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आप टुकड़ों पे आएंगे, तिहाइयों पे आएंगे, प्रमेलू पे आएंगे, परन पे आएंगे, गतों पे आएंगे, भाव अभिनय पर आएंगे। So this is how it goes, how the chronology goes. And इसके लिए आपको अच्छा इत्मीनान चाहिए होता है। तो अ कथक सोलो done in a live manner at least requires 40 minutes to touch all the aspects. आपको 40 से 45 मिनट कम से कम चाहिए होते हैं ताकि आप सारे एस्पेक्ट्स को
टच कर सके. नाउ व्हेन आई से टच, आई लिटरली मीन टच. You can do one angik uthan, you can do one paranamad, you can do one thought, you can do 2 3 4 tihais, you can do 2 3 pramelus. ऐसे just touching the bare surface. नहीं, इसीलिए पुराने जमाने में हम ये देखते थे कि एक नर्तक, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार स्टेज पे कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा, हमने इतना सुना है महाराज जी, इवन माय फादर, when they used to get the stage, they used to dance for 3 hours straight and audience used to watch it. वो देखते थे. अब जब वहां पर वो काम चलता था तो उससे ये समझ आता है कि ऑडियंस को कितना पेशेंस था, कितना इत्मीनान था उस चीज का. मैं नहीं जानता आप लोग कितना वाकिफ हैं. सम ऑफ यू माइट बी नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट. आपने देखा होगा पहले टेस्ट क्रिकेट होता था. इट यूज्ड टू बी फॉर 5 days. 5 दिन तक 2 टीम्स खेलती थी. देन इट बिकेम ओडीआई, 50 ओवर्स, एक दिन में खत्म हो जाता था गेम. इट यूज्ड टू टेक 1 एंटायर डे एंड खत्म हो जाता था. अब 2020 आ गया, ओनली 20 ओवर्स, एक दिन में 2 मैचेस हो रहे हैं. सो इससे हम ट्रेंड क्या देखते हैं? इससे हम ट्रेंड ये देखते हैं कि आज की ऑडियंस हैज बिकम अ लिटिल इम्पेशेंट. आज की ऑडियंस वांट्स अ लॉट टू हैपन विद इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. And you have to evolve. Everything has to evolve according to the needs of the society. तो मैं ये नहीं कह सकता कि अरे ऑडियंस को जाने दो, कोई बात नहीं. ऑडियंस क्या है? ऑडियंस के पास 10 मिनट है, मेरे 10 मिनट देख के चले जाए, मैं तो 3 घंटा नाचूंगा. वो अगर आप वो एस्पेक्ट करेंगे तो आपको अगली बार से कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि आजकल 3 घंटे से कम में पूरी की पूरी म्यूजिकल इवनिंग खत्म हो जाती है. टुडे द प्रोग्राम्स हैविंग one sitar recital, one dance recital, one vocal recital, one ye recital, wo recital, every recital included 1.5 hours. The entire evening is over. तो सबको यही मिलता है, 20 मिनट 15 मिनट, यही. You get this much amount of time. Now to show what you have in that said time, to show that what you have to, instead of taking live musicians, you have to take recorded music. Because in recorded music, everything is fixed. So you know that after 1 hour turn this, after 1 hour turn this, then I have to take 2 hour turns, do this. So everything is very fixed. And due to it becoming fixed, हमारे पास देखिए हमारी बंदिशें होती कितनी. On an average, when you do your पढ़ंत, आप देखेंगे कि आपकी एक बंदिश hardly 15 seconds, 20 seconds at max होती हैं. But वही 15 seconds, 20 seconds माइक तक पहुंचना, माइक पे बंदिश को बोलना, वापस जाना अपनी जगह पर, एक आवर्तन लेना, 2 आवर्तन लेना, और उस बंदिश को लगाना, उस बंदिश को परफॉर्म करना. Suddenly a 15-second thing becomes 1.5 minutes. So you see कि how live changes from recorded, because recorded में आपको जाके पढ़ंत नहीं करनी, आप खड़े हैं, वो बजेगा और आप नाचना शुरू कर देंगे. So there is where we are saving time. So now 20-second bandish will take 20 seconds only. ठीक है? So in 7 minutes, अगर आपको आपके सारे aspects दिखाने का इच्छा है, तो सबसे पहले अपनी USP को समझिए कि मेरी USP क्या है. For me, my USP is my paran. मेरा paran अंग बहुत अच्छा लगता है मुझे. I personally find that it is my stronghold, doing parans. Okay? So what I do is, in my entire ensemble, I do everything very quickly to reach parans. Because for parans, I need a lot of time. मेरे को 2 परन से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं कम से कम 5-6 परन लगाऊंगा. ठीक है? So first you have to understand कि आपके बॉडी के अनुसार, आप सब लोग डांस करते हैं, तो आपके बॉडी के अनुसार कौन सा ऐसा अंग है जो आपको सबसे अच्छा लगता है अपने शरीर पर. सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन उस चीज की. आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको अपने लिए एक ऐसा ट्रैक चुनना होगा 7 मिनट के अंदर अंदर जो आपके उस पॉइंट को हाईलाइट करता हो. ठीक है? अगर मेरा भाव अभिनय अच्छा नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 7 मिनट में से 5 मिनट में भाव अभिनय करूं और आखिरी 2 मिनट में जल्दी जल्दी कुछ 2 चीजें दिखा दूं. आई वुड वांट कि मेरा जो यूएसपी है वो अच्छे से नजर आए मेरी वीडियो में. राइट? सो for all the points that you have, all the things that you have, मेरे हिसाब से
the best way to show the maximum in your 7 minutes is to focus on the point you think is the strongest in your dance. ये उसकी एक की होती है. This is the key of your performance. There are certain things that you do better than the others. I'm sure अगर आप अभी इस समय अपने मन में जाएंगे पीछे और सोचेंगे कि मैं नटवरी अच्छी लगाती हूँ कि मैं आमद, आपको तुरंत एक आंसर आएगा जवाब में, that I do, maybe I do आमद्स better than I do नटवरीज, or I may do natwaris better than I do amad. So it's better to do 2 natwaris and 1 amad if you're doing natwaris better. ठीक है. तो हर चीज का एक क्या कह सकते हैं, एक फेस होता है. यू आर knowledgeable about certain things, you're not knowledgeable about everything. It's very difficult कि आप सारे एस्पेक्ट्स को बराबर तरीके से दिखाने का प्रयत्न करें. इसलिए सारे एस्पेक्ट्स को सिर्फ टच करिए, लेकिन उस एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए जो एस्पेक्ट आपको लगता है कि मजबूत है. तो this is I think this is how I क्या कह सकते हैं, I program my solos according to the plus points of my dance. And दिखाऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन ऑडियंस को ये महसूस नहीं होने दूंगा कि ये मैं उससे बेहतर करता हूँ या ये मैं इससे हल्का करता हूँ. That is the art of जिसको हम बोलते हैं सजावट. ये सजावट होती है हमारे. हम कभी भी नहीं बोलते कि एक सोलो को प्रोग्राम कर लो. प्रोग्राम इज अ वेरी क्या कह सकते हैं, इट्स अ वेरी नॉन कल्चरल वर्ड, डूइंग द प्रोग्राम. ठीक है, बट सजावट बोलते हैं हम इसको, कि एक सोलो को किस प्रकार से सजाया जाता है. तो ये तरीका है एक 7 मिनट के अंदर अंदर अपने सोलो को मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, कि 7 मिनट के अंदर अंदर लोगों को वो दिख जाए जो मैं दिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो दिख जाना चाहिए. ठीक है. So this is how you basically program your recorded or your live items. Thank you so much, Tribhuwan ji. That was a most wonderful session with you, where we came to know about Chiku Bhaiya, that is Jaykishan Maharaj's Ranji story, as well as your story on the college, and that was really wonderful. And आपने जो सबसे पहले एक point दिया आज, observation, I think that is something that everyone should take really note of. And when you came to Junoon of what you want in particular, I think that is really required for any dancer to go ahead, that we need to be passionate about what we want to do against all costs. So I hope all of you did note that, and also you could experience his Junoon, right, just in the way he was talking. So it came across so beautifully. And I think in the end, what you've given us is a very beautiful mantra, that identify what looks best on your body, your USP, and then feature that when you have to decorate. Solo ko jab saja rahe hai, so whether it is 7 minutes or 45 minutes, you can decide, or if it's 3 or 4 minutes also, you first identify what you do best, bring that out into the fore. And I think that's wonderful. Now we'll take some questions which the audience is posting in the chat. And yes, 1 or 2 questions maybe. One question that had come to us previously, and I think especially for Kathak, is that when we are presenting such format for competitions where we are showing our best foot forward, then what is the costuming that it should be? Because in productions there are various varieties of costumes that especially Kathak can use. So do you have a suggestion about the Auchitya and what should be the costuming when presenting yourself as a soloist in a competition format? Absolutely. See, as far as costumes are concerned, until and unless you are not doing any character roles, I would say that wear something which fits comfortably to your body. Now, I'm not talking about anything in specific ki angarkha hi pehniye, ki aap achkan hi pehniye. I'm not saying that. I'm saying that wear the material is very important. On the stage, when you're dancing at home, you have the comforts of your home. You're dancing in a loose kurta, you're dancing in a normal salwar kurti, and like that, us tarike se aap dance kar rahe hain. But on stage, you have to consider a lot of things. The things that you have to consider is first the wooden stage.
सबके घर पे वुडन फ्लोरिंग नहीं होती, किसी ने, जरूरी नहीं होता है कि सबने रियाज के लिए वुडन फ्लोरिंग का घर बनाया हुआ हो। जनरली इट्स टाइल्स, जनरली इट्स अदर थिंग। तो वुड वुड पे क्या कह सकते हैं, वुड पे एक तरीके से स्टैमिना वर्क्स डिफरेंटली। आप टाइल पे नाचते हैं तो स्टैमिना अलग तरीके से खर्च होता है, जब आप लकड़ी पे नाचते हैं स्टैमिना अलग तरीके से खर्च होता है, ठीक है। सेकंड, when I am doing my riyaz, now this is a very important thing, when I am doing my riyaz, I wear 200 ghungroos in 1 feet. So that set is 400, matlab 200 200. So it is very heavy, and I wear those big 16 number ghungroos, kinari wale. So they are very heavy, big. And when I'm dancing on stage, I wear a 101 101 101 101. So what it does is, when I'm doing my training, I'm doing my rigorous training, at that time the foot is very heavy, and I'm at it with that heaviness. But when I'm dancing on the stage, I'm dancing with lighter ghungroos, which basically makes me feel that I'm not wearing any ghungroos. The weight goes away. So that's a very important thing. That's a very important thing, very important tip when you're on stage. Always practice with higher amount of ghungroos. When you're practicing on stage, use a little lighter version of it. Okay. So घुंघरू होते हैं, stage का material होता है. Lights emit a lot of heat. Now, what is heat doing? Heat is dehydrating you as you are dancing. It is killing your stamina. So that is an additional thing which is not at home, but it is there on the stage. उसके अलावा, when you are in front of the audience, no matter how experienced you are, I know this for a fact, that even the most experienced dancers have, a moment of stage fright. A moment. हल्का सा एक मन में एक कसर होती है, उस कसर से गला सूखता है. When you're going on stage and that uthan is going in, it is going on, and you are about to enter the stage, there is one little moment where you feel that, itna सूख गया कि it is itching. My neck is itching, my gala is itching. So at that point of time, you always have to remember, like what I do is, I put a little bit of misri in my mouth, just below my tongue, so it keeps it little, थोड़ा सा ऐसा रखता है, wet रखता है उसको, गले को, and it dissolves, and then it is fine, because once you are on the stage, you are a confident dancer. So when you're on the stage, धीरे धीरे you get accustomed to it, and then you don't require the misri anymore. ठीक है. So जहां तक costume की बात है हमारी, costume आपकी इस हिसाब से होनी चाहिए कि all these factors that I have just said, the dehydrating lights, the material wood, your ghungroos. So costume should not be your enemy. Costume should be your friend. तो आप शरीर पे आप, it's not about the shape of the costume, it's more about the material. अब मैं अगर ऊपर एक हेवी कपड़ा, ब्रोकेट का कपड़ा ऐसे लेके मैं वो पहन लूं, अंदर उसके लाइनिंग लगा दूं, ठीक है, आई नो माई कॉस्ट्यूम वुड बिकम 20 किलोज तुरंत. अब उस 20 किलोज में मैं क्या ही नाच पाऊंगा? how much agility would I have when I dance? तो automatically the dance will become slow. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे आप सभी मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं, तादाद जो है वो फीमेल्स की मुझे ज्यादा दिख रही है, इसलिए मैं बताऊं, दिखने में बड़ा घेरा बहुत सुंदर लगता है जब आप बड़े घेरे का कुछ भी पहनते हैं, बिकॉज यू कनेक्टेड डायरेक्टली टू पिरुएट्स, कि जब आप पिरुएट्स लोगे तो वो बहुत अच्छे से वो फ्लेयर होगा, राइट? फ्लेयर होगा तो वो सुंदर दिखेगा, ऐसा दिखेगा. बट देयर इज अ वे ऑफ मेकिंग, मतलब उस चीज को बनाने का एक तरीका होता है. अगर आपने बहुत हैवी गोटा या आपने कोई भी इस तरीके का काम आपने नीचे कर दिया, सडनली द एंटायर फ्रिल ऑफ इट विल बिकम वेरी हैवी. सो व्हेन यू टेक दोस पिरुएट्स, एंड इफ यू आर नॉट दैट, क्या कह सकते हैं, नॉट हेफ्टी इनफ, आप पतले हैं या आपका वजन कम है, यू आर नॉट हेफ्टी इनफ, व्हेन यू फिनिश योर पिरुएट्स, वो ऐसे लपेट के आपको आएगा और आपको एक्स्ट्रा घुमा देगा. देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू काउंटर दैट इफेक्ट. ठीक है. अब जहां पर आपको 10 चक्कर मारने, 20 चक्कर मारने और 20 चक्कर मार के धा करके रुकना है, और धा करके रुकने की जगह आप उसी के साथ अपनी कॉस्ट्यूम के साथ ही घूम गए बिकॉज इट वाज सो हैवी. तो आप जब आप उसका घेरा भी बनाते तो घेरा का एक हिसाब होता है. घेरे का वजन, कभी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात है, घेरे का हिसाब कभी भी नीचे हैवी ना करें घेरे को. अगर आपने घेरे को नीचे हैवी कर दिया, देन
it will just not stop. Even after you have done dha, it will not stop. It will keep on going. It will wrap around you. It will try to budge you from your stance. And third की stance से budge हो जाना तो सबसे खराब है, ठीक है? Because it's almost like it's anti-climactic कि आपने धा मारा और आप हिल गए. So as far as costumes are concerned, आपकी अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल उसमें होनी चाहिए. मैं एक चीज इसमें और डालना चाहता हूं कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है. जब आप इसको सीखें तो शास्त्रीयता से सीखें. शास्त्रीय होने का ये मतलब नहीं कि आप ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है? ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑर्थोडॉक्स हैं, बट शास्त्रीय होने का मतलब ही यही है कि आप अपने तन को ढक कर नाचें. I have seen a lot of Kathak costumes, horrendous Kathak costumes, जिनको मैं एक बार को बोलूंगा भी नहीं कि ये कथक नृत्य के लायक हैं. And I've seen people do it. I've seen good people doing it, and it saddens me because और किसी तरीके से अगर ये बात उन तक पहुंचाई भी जाए कि देखिए it was a little vulgar, तो वो बोलेंगे you are very orthodox. I am saying I am not orthodox. मैं शास्त्रीय हूं. मैं शास्त्रीय इसलिए हूं क्योंकि शास्त्रीय होने का जो एक मतलब है ना, ये कल्चरल डांस है. यू नो, इट्स रिलेटेड टू आवर कल्चर. एंड अगर आप हिंदुस्तान का कल्चर देखें, अगर आप भारत देश का कल्चर देखें, तो किसी भी प्रकार से नग्न होना हमारे कल्चर में ही नहीं है. इट्स नॉट देयर. हाँ, हम कहीं वी वर देयर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड ये वेस्टर्न कंट्री का डांस होता है. तो वेस्टर्न कंट्री के डांस के फॉर्मेट्स कैसे होते हैं आपने देखे हैं. यू नो हाउ दे आर, हाउ द कॉस्ट्यूम्स आर. सालसा की कॉस्ट्यूम देख लीजिए, बैले की कॉस्ट्यूम देख लीजिए, किसी भी उसके देख लीजिए. यू सी दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द कंट्री. इट एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट्स इट कि ये हमारा कल्चर है. इट्स देयर कल्चर. दे रिस्पेक्ट देयर कल्चर. आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, बट आई रिस्पेक्ट माई कल्चर मोर. And I will, for being a Bharatiya, I would like to follow my culture. इसीलिए आप किसी भी प्रकार के अपने कॉस्ट्यूम्स में आप किसी भी प्रकार का आप वो कलर से खेल लीजिए, रंगों से खेल लीजिए, आपको लेयर से खेल लीजिए. देयर इज सो मच टू डू व्हेन यू स्टार्ट लेयरिंग योर कॉस्ट्यूम्स, कि अंदर क्या रखना है, उसके ऊपर क्या रखना है, यहां से कैसे बाजू रखना है, उस चीज को कैसे रखना है. आप सब कर सकते हैं, बट अगर आप बैकलेस हो जाएंगे तब तो करने को कुछ रह ही नहीं गया. कपड़े की क्या खूबसूरती, कॉस्ट्यूम की, वेशभूषा की क्या खूबसूरती, जब वेशभूषा है ही नहीं. तो जहां तक आप नृत्य कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू फॉलो दिस इन योर पर्सनल लाइफ, बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारे रंगमंच की एक गरिमा होती है. उस गरिमा को भंग करना, अपशब्द रंगमंच पे बोलना, किसी भी प्रकार का अपशब्द बोल देना, किसी भी एक जो पेडिस्ट्रियन लैंग्वेज होती है, या अभी भी जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें रंगमंच पर नहीं चलती. रंगमंच पर आप कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं. एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस. आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स like I'm talking to you. I don't talk to my friends like the way I talk on the stage. मैं अगर उस प्रकार से उससे बात करना शुरू कर दूं तो वो मुझे बोलेंगे अरे क्या हो गया भाई तुझे. लेकिन आप रंगमंच पे एक टोटली अलग एंटिटी होते हैं. इसलिए आपकी बोलचाल, आपकी वेशभूषा, how you are carrying yourself, how you are treating your musicians, how you are treating your the people who are responsible. आपके मेकअप मैन हो गए, आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गए, आपके लाइट मैन हो गए, how you are treating your audience, all these things they matter a great deal. क्योंकि आप जो रंगमंच पे दिखाते हैं, आपको लोग उसी तरीके से लेना शुरू करते हैं. वो बड़े सरल कलाकार हैं, वो बड़े सरल इंसान हैं, अरे उनको कौन बुलाएगा, उनके तो 50 नखरे हैं. We keep hearing these things about artists in our fraternity. इसलिए वेशभूषा, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है और रंगमंच की बात हो रही है, इसलिए वेशभूषा शास्त्रीय ही होनी चाहिए, within the realms of your culture. ठीक है.
उसके अलावा यू कैन प्ले विद लेयर्स, यू कैन प्ले विद कलर्स, यू हैव टू बी very very confident about what you're wearing. It should be comfortable. Your costumes should be airy. Airy मतलब ऐसा कुछ मत पहन लीजिए जो हवा को आपसे ब्लॉक करे. जनरली लाइनिंग अगर लगा दी जाती है अंदर तो एकदम ब्लॉक हो जाता है, देन यू फील वेरी टाइट, यू आर लाइक स्टफ्ड इनटू योर कॉस्ट्यूम. वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए. कॉस्ट्यूम में भी एक हल्का आपके बॉडी के शेप को वो दिखाए, लेकिन आपके बॉडी की शेप से चिपक ना जाए, क्योंकि जब वो चिपकेगा यू विल फील डिहाइड्रेटेड, यू विल फील अ लैक ऑफ स्टेमिना, एंड वो चीज आपके फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि अभी आपको 7 मिनट मिला है, लेकिन जिंदगी में 7 मिनट थोड़ी ना मिला है. जिंदगी में आप पता नहीं कितनी बार नाचेंगे, कितनी बार आपको रंगमंच मिलेगा. आपको 40 मिनट भी मिलेगा, आपको 1 घंटा भी मिलेगा, और आप अगर बहुत ही बड़े कलाकार बन गए तो आपको हो सकता है कि पूरी इवनिंग मिल जाए कि आप आ जाइए, जितना देर आपको नाचना है आप नाचिए. सिचुएशंस विल कीप ऑन चेंजिंग, बट आपकी कॉस्ट्यूम आपकी मित्र होनी चाहिए, आपकी शत्रु नहीं. ऑन स्टेज इट शुड बी कंफर्टिंग. बस ये है कॉस्ट्यूम्स के बारे में. Thank you. That was such a beautiful thought कि costume हमारे मित्र होने चाहिए, and so beautifully you have given all the technical ways in which to approach it. We are almost out of time, but there are 2 questions which have come repeatedly in the chat that I'm getting. One is that Pranam sir, can you please give us some tips for breathing? I am 9 years old and I get very tired while performing. Okay, so tips for breathing. This starts from द बेसिक फाउंडेशन. जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप फाउंडेशन करते हैं, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वन मूवमेंट. पहला मूवमेंट हम लोग ऊर्ध्व हस्त चक्र करते हैं. जो ऊर्ध्व हस्त चक्र करते वक्त जो हमारे उत्पत्ति, जहां हमने उत्पत्ति को बैठाया है, जिस हिसाब से हम उत्पत्ति को टर्न करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, फेंकते हैं, पूरे अंग से घुमाते हैं, घुमाकर लेते हैं, नीचे लेकर आते हैं, आपकी कलाई घूमती है, घूम के आपकी एल्बो को रोकती है, एल्बो चढ़नी नहीं चाहिए, इस तरीके से नीचे गिरती है. तो जब हम ये करते हैं, दिस इज वन मूवमेंट, बट दिस आई डिड इट कंप्लीटली विदाउट यूजिंग एनी ऑफ माय ब्रेथ. ठीक है. अब इसी चीज को जब मैं सांस के साथ जोड़ता हूं तो आप देखेंगे कि जैसे सरगम में आरोह अवरोह होता है, आप सारे गामा पाधा निसा ऊपर जाते हैं, फिर सानी धा पा मा गा रे सा नीचे आते हैं. उसी प्रकार से आप जब इसको खींचते हैं, यू स्टार्ट इनहेलिंग, यू डू 1 2 3 4, यहां तक आप जो जाते हैं, यहां तक आपने सांस खींची. 5 में आप अपनी सांस को रोकते हैं, 5, अब यहां से आप छोड़ते हैं, दीजिए 6 7 8. सो इसको चाहे वो मध्य हो, चाहे वो तल हो, चाहे वो इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट हो, जब हम अपने मूवमेंट्स को ब्रीदिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका वक्ष जो है वो काम करना शुरू होता है. आप चढ़ते हैं. हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि एक चित्र है, जो एक नर्तक है या नर्तकी है, वो एक चित्र है. चित्र को कभी भी फ्रेम के बाहर नहीं होना चाहिए. अगर चित्र फ्रेम के बाहर हो गया तो उसका हाथ कट जाएगा, जैसे अभी मेरा कट रहा है इस तरीके से. ठीक है. चित्र तभी तक अच्छी है जब तक उसका हाथ अंदर है. अब यहाँ पे मध्य हस्त दिखाने के लिए मैं आपको ये नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा देखिए मध्य हस्त चक्र, ताकि आपको नजर आए कि मैं मध्य हस्त चक्र में क्या कर रहा हूँ. उसी प्रकार से जो आपका फ्रेमिंग है, उस फ्रेमिंग को अगर आपको आपके शरीर आपके ऊपर नहीं चढ़ता, मतलब आपका मूवमेंट आपके ऊपर नहीं चढ़ता, हम अपने मूवमेंट को अपने शरीर पर चढ़ाते हैं. इट डज नॉट गो फार फ्रॉम योर बॉडी, हम उसको चढ़ाते हैं अपने ऊपर. द वेट ऑफ द हैंड इज कमिंग ऑन टू माई वक्ष, इस तरीके से. ठीक है. तो ये ब्रीदिंग इन एंड आउट की एक्सरसाइज आप जैसे जैसे फाउंडेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक क्या कह सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ योर बॉडी. धीरे धीरे आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर को ये करते ही उसकी आदत पड़ गई है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए. बट जिस तरीके से आप छोटे बच्चे हैं वो तो खैर गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन जो कुछ बड़े मुझे दिख रहे हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं,
तो आप ये देखेंगे कि आप आफ्टर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे स्टीयरिंग कितना घुमाना है, या मेरा गियर कहाँ पर है, या मुझे क्लच कब दबाना है, या ब्रेक कब दबाना है. इट बिकम्स इनवॉलंटरी. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वे वेयर आई एम गोइंग एंड ट्रैफिक से कैसे बचना है, बस दैट्स इट. उसी तरीके से जब आप इसको साधते हैं, जब आप ब्रीथ को साधते हैं, कब चढ़ाना, कब घुमाना, रोक लेना, कब छोड़ देना, कब खींचना, कब रोक देना, कब घुमाना, हर मूवमेंट के साथ इस तरीके की एक नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस होता है. The more you get better in this, the less stamina you will use while you are dancing one certain any composition, कोई भी बंदिश. And धीरे धीरे it will collectively become कि आप थकोगे ही नहीं. The fatigue will come after a really really long time. आपको बहुत देर में वो करेगा. इसीलिए ब्रीदिंग के लिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने फाउंडेशन से अपने ब्रीदिंग को कनेक्ट करिए, हर मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करिए और उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए तब तक जब तक ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन ना बन जाए. क्या बात है, that was such a beautiful answer and I think we'll have to conclude, but अगर आप एक एक लाइन में इनको, I know it will be difficult, but the question that has come thrice is how do I check if I am doing correct रियाज or no, जो आपने शुरुआत में बात की थी कि करेक्ट रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या ऐसे कोई एक दो पॉइंट है जो हम उनको दे सकते हैं, जो बस सेल्फ चेक जब आप घर पे खुद से रियाज कर रहे हैं और when you are young, अगर हम we can conclude with this actually. एब्सोल्युटली. देखिए ऐसा है कि सही रियाज करने का जो सलीका होता है वो आता है कि आपको किस तरीके से सिखाया गया है, किस तरीके से सिखाया गया है. मतलब मेरे गुरु ने जो ऑब्जर्वेशन के तौर पर मैंने, आई यू विल नॉट बिलीव दिस, कि मैंने अपने गुरु से उनके कोरियोग्राफीज में नाच नाच के डांस सीखा है. मैंने उनके साथ कभी भी क्लास में खड़े होकर डांस नहीं सीखा है. सो कभी कभी जब मैं उनकी क्लास में खड़ा हो जाता हूँ तो वो, और जिस हिसाब से मैं नाचता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं अरे जरा हल्के अंग से नाचो, तुम तो ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे परफॉर्म कर रहे हो. तो मैंने कहा मैंने क्लास का नाच कभी सीखा ही नहीं कि क्लास में नाचा कैसे जाता है, मुझे तो परफॉर्म ही करना आता है. तो आप इसको समझ लीजिए कि रियाज की एक क्रोनोलॉजी होती है. ठीक है, एक तरीके से रियाज किया जाता है. एक सिंगल उसमें मैं आपको रियाज की एटलीस्ट एक सही क्रोनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप रियाज को उस तरीके से करें. सबसे पहले होती है क्रम लय. क्रम लय आप बनाते हैं. क्रम लय जिनको तिगुन चौगुन तिगुन 6 गुण 12 गुण या 5 गुण 7 गुण, जैसे मैं 1 से 16 गुण मैं सारे गुण बनाता हूँ. पर अगर आपको अभी लगता है कि भाई हम तिगुन 6 गुण नहीं बना पाते या हम 5 गुण 7 गुण नहीं बना पाते, तो सबसे बेसिक होता है 1 गुण 2 गुण 4 गुण 8 गुण 16 गुण. इन गुणों को आप सबसे पहले बैठाइए. ठीक है, तो क्रम लय को करिए, हर गुण को 2-2 आवर्तन करिए. ठीक है, 1 गुण को 2 आवर्तन किया, 2 गुण को 2 आवर्तन किया, 4 गुण को 2 आवर्तन किया, 8 गुण तक पहुंचे. जब 8 गुण पे आप पहुंचे 2 आवर्तन पे, तो 4 प्रकार की तत्कार होती है. खुले पैर की तत्कार जिसमें आप पूरा पैर रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका रियाज करिए 8 गुण में. उसके बाद एड़ी की तत्कार होती है जिसमें हम अपने पंजे को जमीन से दबा देते हैं और सिर्फ एड़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे एड़ी में गमक पैदा होती है, एड़ी में साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके. तीसरी जो है वो पंजे की तत्कार होती है जिसमें हम एड़ी को दबा लेते हैं और सिर्फ पंजा उठाते हैं. ये सबसे पेनफुल तत्कार होती है, इसमें काफी दर्द होता है आपके मसल्स में. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड आखिरी जो होती है, जो कथक में सबसे ज्यादा यूज होती है, उसको हम बोलते हैं एड़ी पंजे की तत्कार, जिसमें हम बोलते हैं फ्लैट एड़ी एड़ी फ्लैट एड़ी एड़ी पंजा, इस तरीके से. ठीक है, तो इन 4 अडगुन में आके आप इन सारी चीजों का आप अभ्यास करें, सारे एक्सरसाइजेस का अभ्यास करें. सारे एक्सरसाइजेस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. तो ऊर्ध्वहस्त चक्र, मध्यहस्त चक्र, तलहस्त चक्र, ऊर्ध्वहस्त कोण सूचिता, मध्यहस्त कोण सूचिता, तलहस्त कोण सूचिता, स्त्रोत, चवर, समतल कोण, पुष्पक, जल भ्रमरी, अर्ध आलिंगन, अर्ध मीन, मीन, लवशिका, इन सारे मूवमेंट्स का आप रियाज करें अडगुन में अपने आप को लाके. अडगुन के बाद आप एड़ी पंजे की तत्कार को कंटिन्यू करते हुए आप 16 गुण में जाएं. और आप जितनी देर 16 गुण में रह सकते हैं जब तक आपके पैर कांपने लगे. इसलिए मैंने जुनून जैसा शब्द इस्तेमाल किया था.
because you have to fight the pain when you are doing your riyaaz. You have to fight that pain, क्योंकि आपका पैर दुखेगा. आपका पैर दुखेगा तो आपका दिमाग बोलेगा छोड़ दो रियाज. तो यू वहां पे आपका जुनून काम आएगा. योर विल पावर विल कम इनटू एक्शन. 16 गुण में जहां तक अपने पैर के मसल्स को आप रिलैक्स करके आप जितना लंबा 16 गुण खींच सकते हैं खींचिए. रियाज मैं पर्सनली अंधेरे में करता हूं. अंधेरे में करने से बहुत फायदा ये होता है कि आपकी जब देखने की शक्ति, मैं घुप अंधेरे में करता हूं, तो जब आपके देखने की शक्ति खत्म हो जाती है तो आपकी सुनने की शक्ति हाइटन हो जाती है. और जब आपके पैरों के घुंघरुओं की आवाज और आपके ताल माला, इलेक्ट्रॉनिक तबला और वट एवर मीडियम यू आर यूजिंग टू कीप योर ताल, जब आप उसको बजाते हैं तो सिर्फ उसका साउंड और आपके पैरों का साउंड, दे बिकम वन. And I feel that sometimes it puts me into a very, I have coined this term cultural trance. It puts me into a cultural trance. तो क्योंकि ट्रांस जनरली बहुत खराब चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है कि इसने तो मुझे ट्रांस में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. सो आई एम यूजिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस. इट पुट्स यू इन अ वेरी कल्चरल ट्रांस, जहां पे आपको सिर्फ आपके पैरों की घुंघरुओं की झनकार और आपको ताल माला का एक साउंड सुनाई दे रहा है. यू कांट सी एनीथिंग एंड द ओनली थिंग is your riyaz, that is going, and it helps you to keep on going, keep it consistent for a very long time. तो उसको जहां तक रख सकते हैं रखें. अपने आप को बांध ले कि पहले मैं विलंबित का 20 आवर्तन मैं 16 करूंगा, 16 गुण में करूंगे, फिर उसको 25 कर दीजिए, फिर उसको 30 कर दीजिए. ऐसे करके slowly and steadily increase your riyaz. This is one part of your riyaz where you are polishing your foundation. The second part of your riyaz is doing your practical things. मतलब परनामद, आमद, टुकड़े, तोड़े जो आपने सीखे हैं उनको साधना. ऐसा मत सोचिए कि हमने ये अच्छा कर लिया, ये अब हमारा एकदम बढ़िया है, इससे हम एकदम से बहुत अच्छा नाचने लगेंगे. ऐसा नहीं होगा. आपको तगनक थर्री कुक्कू तक से लेके दित्ताम से लेके आपको हर चीज को आपको अलग से सेपरेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू कैन नॉट प्रैक्टिस एवरीथिंग विच इज मेड इन दिस वर्ल्ड फॉर कथक. क्योंकि अगर आप इस समय संग्रहित करने जाएंगे तो कथक में जितने भी कथक गुरु हुए या पुराने जमाने से जो चली हुई आ रही हैं चीजें सैकड़ों होंगी, सैकड़ों. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, सैकड़ों होंगी. लाखों करोड़ों के बाद सैकड़ों आता है, सैकड़ों होगी. तो आप सैकड़ों चीजों को अपने शरीर में नहीं बैठा सकते. इसीलिए कुछ बंदिशों को, कुछ चीजों को अपने शरीर में ऐसा बैठाइए कि कोई दूसरा उस तरीके से ना कर सके. You cannot make everything unique. You have to make a few things unique to your body, to your presentation. कि जैसा इन्होंने कर दिया वैसा कोई नहीं कर सकता. उन चीजों का अभ्यास करिए, उन चीजों का रियाज करिए. 4-5 साल एक ही जैसा नाचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ही जैसा नाचिए 4-5 साल, फिर अपना फॉर्मेट बदल दीजिए. उन 4-5 सालों में आप दूसरी चीजों पे काम करिए, फॉर्मेट बदल दीजिए. एक नई हवा के साथ आइए, एक नई ताजगी के साथ आइए, फिर 4-5 साल में फिर बदल दीजिए. यू हैव टू इवॉल्व एज अ डांसर. यू हैव टू इवॉल्व and you have to keep on adding and subtracting things from your ensemble of things. That is how you do your riyaz. Thank you so much, Tribhuwan ji. That has been a wonderful hour with you. And thank you for the extra time that you gave in answering so many questions. The last question, which has come twice, I'm not going to ask it as a question, but let's do it as an activity. One student is saying that I'm 11 years old and I find it difficult to maintain my smile. And another is saying that shuru mein smile karti hu, but baad mein serious ho jati hu. So like Tribhuwan ji said, we have to make breathing a part of our involuntary movement. Like that, the smile also has to become. So let us all start our cameras and give a beautiful smile and applaud for this beautiful session with Tribhuwan ji and keep smiling from now on. So let's do that and conclude this session. I request everyone to join us, and Akshay ji, our admin host, will take some lovely pictures with everybody and let me see everybody's smiles. So, and yes, everybody enjoyed this session. We had such beautiful knowledge, right? Tribhuwan ji has really given you knowledge of many lifetimes compacted into his such short, beautiful answers, and
We are in a cultural trance listening to you and want to listen more. So thank you so much. Let's see everybody smiles. Yes. Wonderful. So with that, we conclude this session. Thank you so much for being here. Thank you so much. And we'll see you all as Jhankriti progresses. We might see all of you have shared your videos. We have our pre-screening jury that is going through more than 500 videos that have actually come in Kathak. And we'll be sending the best ones to Tribhuwan so that he can make selections of who should go to the next round. So best wishes to all of you. And the knowledge that you got today from him is going to help you, as he said, throughout your life in your journey ahead in Kathak. So thank you so much. Jai Gurudev.